Hello and welcome back, dear students. I really hope that you all are doing well. So, in the previous videos of chapter number 2, we have discussed about indicators, types of indicators, and we have also discussed about acids, bases, and their classification. Okay, so in today's video, we're going to discuss Firstly, we're going to discuss about physical properties of acids and bases, and then we're going to discuss very important topic of the chapter, which is chemical properties of acids and bases. All right, so please be ready with your pen and notebook so that you can note down important points. All right, so let us proceed now. Physical properties of acids and bases. Acids, they are sour in taste. Okay, that means थोड़े से खट्टे टाइप होते हैं. Okay, and bases, they are bitter in taste, मतलब कड़वे होते हैं. They are soapy in touch, मतलब अगर उन्हें आप टच करेंगे तो जैसे सोप को टच करने के बाद हाथ चिकने हो जाते हैं, सोपी हो जाते हैं, स्लिपरी हो जाते हैं, वैसे ही बेसिस का भी टेक्सचर होता है. All right. Secondly, acids turns blue litmus red एंड मिथाइल ऑरेंज. इनिशियली वो ऑरेंज कलर का होता है न्यूट्रल मीडियम में. सो व्हेन वी ऐड एसिड इट चेंजेस द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज फ्रॉम ऑरेंज टू रेड. ऑलराइट, whereas basis turns red litmus blue. ऑलराइट, ये जो लिटमस होता है आपने देखा होगा केमिस्ट्री लैब में लिटमस पेपर भी आते हैं, ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर, और सोल्यूशन फॉर्म में भी आते हैं, रेड लिटमस सोल्यूशन, ब्लू लिटमस सोल्यूशन. सो एसिड्स एंड बेसिस को आइडेंटिफाई हम ऐसे ही करते हैं. सपोज वी हैव टेकन अ सॉल्यूशन. ठीक है, कोई भी हमने एक, सपोज पहले से हमें पता है कि एक बेसिक सॉल्यूशन हमने टेस्ट ट्यूब में लिया है, सपोज NaOH लिया है. ऑलराइट, तो हमने उसमें रेड लिटमस सॉल्यूशन अगर हम उसमें ऐड करते हैं, ड्रॉप कुछ ड्रॉप्स अगर हम उसमें ऐड करेंगे तो वो जो सॉल्यूशन का कलर होगा इट विल चेंज टू ब्लू. ठीक है, वो कंफर्म करता है कि ये क्या है, टेस्ट ट्यूब में कौन सा सॉल्यूशन है, बेस है. वी ऑलरेडी नो दैट NaOH इज अ बेस, बट अगर हमें नहीं मालूम है कि कौन सा सॉल्यूशन है टेस्ट ट्यूब में और हमें बताना है इसे एसिड है ये या बेस है, तो हम लिटमस की हेल्प से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सिमिलरली, मिथाइल ऑरेंज का जो कलर होता है इनिशियली ऑरेंज होता है, एंड व्हेन वी ऐड अ बेसिक सॉल्यूशन इट चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम ऑरेंज टू येलो. ठीक है, एसिड्स में क्या हो जाता है, ऑरेंज टू रेड, और बेसिस में हो जाता है ऑरेंज टू येलो. So these are the points of differences between acids and bases. All right. Now there are few similar points also between acids and bases. First is corrosive. You can see in the table given above that acids and bases both are corrosive in nature. Now, what is the meaning of corrosive? Corrosive means they have strong burning action on skin and they can even produce blisters. एसिड्स एंड बेसिस इतने स्ट्रांग होते हैं कि इनका बर्निंग एक्शन होता है, बर्निंग इफेक्ट होता है. अगर गलती से भी हमारी बॉडी पर स्ट्रांग एसिड या स्ट्रांग बेसिस अगर गिर जाए तो हमारी बॉडी जल सकती है. एंड दे कैन प्रोड्यूस ब्लिस्टर्स ऑल्सो. ब्लिस्टर्स मीन्स छोटे छोटे फोड़े हो जाते हैं. इज दैट क्लियर? ओके. सेकेंड पॉइंट इज दे बोथ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर. ठीक है, ये जो सब्सटेंसेस होते हैं, these substances act as acids or bases only in water. Now let me give you one example. In gaseous state, HCl is called HCl gas, hydrochloric gas. Okay. Now at present it is not an acid and hence does not conduct electricity. All right. I'm talking about HCl gas. HCl gas is not an acid. Okay, it is in the gaseous state, it is not an acid and therefore it does not conduct electricity also. But in aqueous solution means जो solution water से बनता है. ठीक है, so in aqueous solution it dissociates into H plus ions and Cl negative ions. ठीक है, आपको मालूम है HCl जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं, सो
इसका डिसोसिएशन हो जाता है आयंस के फॉर्म में, H प्लस आयंस एंड Cl आयंस, Cl नेगेटिव आयंस फॉर्म हो जाते हैं, which are basically hydrated ions. Okay, so it is called HCl acid and therefore it conducts electricity. Electricity का conduction कैसे होता है? By the movement of ions. Alright, और gaseous form में कोई भी ions का movement नहीं होता क्योंकि ions ही नहीं form होते हैं। लेकिन जब एक्वस सॉल्यूशन में जब HCl को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो डिसोसिएशन ऑफ इनटू दे डिसोसिएट इनटू आयंस H plus ions and Cl negative ions. All right, and therefore they can conduct electricity. All right, so these substances act as acids or bases only in water. Okay, so the next topic is chemical properties of acids. This topic is very, very important for you both. First chemical property is reaction of acids with metals. So acids, when they react with metals, they form salt and hydrogen gas is evolved. You have to learn and remember this relation. जब भी कोई भी एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है या कोई भी एसिड में अगर आप किसी मेटल को ऐड करते हैं तो वो हमेशा आपको याद रखना है कि वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं. Is it clear? Please understand this relation. I have written here also acid plus metal gives salt plus hydrogen. Okay, ये जो upward arrow है ये show करता है कि ये हाइड्रोजन gaseous form में evolve हुई है. All right, so I have given one example also. Acid में आप मैंने यहाँ लिखा है HCl. You can use any acid, H2SO4, HNO3, any acid you can take. So HCl plus metal, I have taken zinc metal. So HCl जब zinc metal के साथ react करेगा, it will form ZnCl2, that is zinc chloride plus H2, that is hydrogen gas is evolved. All right. So here you have to remember this relation. कोई भी एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही बनाएगा. All right. Second chemical property is reaction of acid with metal carbonate or bicarbonate. All right. तो मेटल कार्बोनेट सबसे पहले क्या होता है, किसी भी मेटल का कार्बोनेट, फॉर एग्जांपल सोडियम. सोडियम क्या है, मेटल है, इसका कार्बोनेट क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट. ठीक है, इसका मेटल बाइकार्बोनेट का एग्जांपल हम ले सकते हैं. सोडियम का बाइकार्बोनेट है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3. किसी भी मेटल को आप यूज कर सकते हैं, जिंक कार्बोनेट, जिंक बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट. All right, so the relation here is when an acid react with a metal carbonate or a bicarbonate, it will form salt, water and carbon dioxide gases formed. So here I have taken two examples, sodium carbonate and sodium bicarbonate. All right, so we will going to see these reactions now. H2SO4 plus Na2CO3. H2SO4 is an acid which is sulfuric acid and Na2CO3 sodium carbonate. So when these two react together, H2SO4 and Na2CO3, they form Na2SO4 which is sodium sulfate. Alright, this is a salt plus H2O and CO2. Another example is of sodium bicarbonate. So when an acid H2SO4 reacts with sodium bicarbonate NaHCO3, they will form Na2SO4 again, which is a salt plus H2O plus CO2. All right. So आपको हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि जब भी एसिड और मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट रिएक्ट करेंगे तो सबसे पहले सॉल्ट लिखना है आपको, फिर उसके बाद H2O and CO2 आपको लिखना ही लिखना है. All right. And then check whether the reaction is balanced or not. All right. So this is the second chemical property. Third chemical property is reaction of acids with bases. Now this is very easy. We have already done this reaction since chapter 1. Alright, so acid plus base gives salt and water. इस reaction को neutralization reaction भी बोलते हैं. हम chapter 1 से इसको पढ़ते आ रहे हैं. So acid HCl plus base NaOH gives NaCl plus H2. NaCl क्या है? Salt और H2O is water. Alright, you can take any example.
H2SO4 ले सकते हैं आप, KOH ले सकते हैं। और आपको हमेशा यही ध्यान में रखना है कि प्रोडक्ट्स क्या फॉर्म होंगे, सॉल्ट एंड वाटर। ऑल राइट। The last chemical property, that is fourth chemical property of acid, is reaction of acids with metal oxides. Now what are metal oxides? कोई भी metal का oxide form क्या होगा? Suppose example ले लेते हैं sodium. Sodium is a metal, तो इसका oxide क्या होगा? Na2O, sodium oxide. All right. Here I have taken two oxides, CaO, which is calcium oxide, CuO, which is cupric oxide. All right. सो दीज आर मेटल ऑक्साइड। किसी भी मेटल और ऑक्सीजन को जब रिएक्ट कराते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। इज दैट क्लियर? So here is the relation. When acid react with any metal oxide, they will form salt and water. आपको हमेशा याद रखना है कोई भी एसिड और कोई भी मेटल ऑक्साइड जब रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट हमेशा सॉल्ट और वाटर ही फॉर्म होगा। Is that clear? Examples are HCl, which is hydrochloric acid, plus CaO, which is calcium oxide. When these two react together, they will form salt. Salt किस फॉर्म में बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड के फॉर्म में, CaCl2 plus H2O, which is water. Second example is HCl, which is hydrochloric acid, plus CuO, which is cupric oxide. They will react together to form CuCl2, which is cupric chloride plus water. Is that clear? So these two are the examples. There can be many examples. आप कोई भी एसिड ले सकते हैं, आप कोई भी मेटल ऑक्साइड ले सकते हैं, बट आपको हमेशा ध्यान में क्या रखना है कि प्रोडक्ट्स क्या फॉर्म होने चाहिए, सॉल्ट एंड वाटर. ऑल राइट. So these are the chemical properties of acids. I hope you have understood. Now let us proceed to chemical properties of bases. और जब हम chemical properties of bases पढ़ेंगे तो आपको ये realize होगा कि बहुत सारी properties acid से related हैं. ठीक है, जैसे ही acid का relation है किसी भी other reactant के साथ, वैसे ही bases का भी है. Is that clear? So बहुत easy है इसको समझना. So now let us proceed. Chemical properties of bases. First property is reaction of base with metal. If you remember, हमने chemical properties of acid में भी first property यही पढ़ी थी, reaction of acid with metal. तो दोनों का relation same है, products दोनों में same बनेंगे. Base plus metal gives salt and hydrogen gas. आपको याद आ गया होगा कि जब acid भी metal के साथ react करता है तो वो salt और hydrogen gas ही form करता है. So similarly, when bases react with metal, they also form salt and hydrogen gas. So two examples given here are NaOH, which is a base, plus Zn, which is a metal. So when base and metal react together, they form salt, which is sodium zincate. Formula क्या है? Na2ZnO2. This is a salt, all right? And H2 gas is evolved. Second example is NaOH, which is a base, plus Al, which is aluminium metal. So when these two react together, they will form NaAlO2, which is known as sodium aluminate. This is a salt plus hydrogen gas is evolved. Is that clear? So आपको क्या याद रखना है कि जब भी बेस और मेटल रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट्स क्या फॉर्म होंगे, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. ऑल राइट. Second chemical property is again very easy, reaction of bases with acid. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एसिड में भी एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, और यहाँ बेसिस का क्या है, बेसिस एंड एसिड जब रिएक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली सॉल्ट एंड वाटर ही फॉर्म होगा. दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. एग्जाम्पल NaOH प्लस HCl गिव NaCl प्लस H2O. ऑलराइट, आप H2SO4 भी ले सकते हैं और KOH भी ले सकते हैं. So when KOH and H2SO4 react together, they will form K2SO4 plus H2O. Is that clear? Third and last chemical property of bases is reaction of bases with non-metallic oxides. Non-metal oxides के साथ जब भी bases react करते हैं, they will form salt and water. अब non-metal oxides क्या होते हैं? Acids का हमने जब पढ़ा था तो उसमें देखा था acid और metal oxides react करते हैं. Then they form salt and water. और bases किसके साथ react करते हैं? Non-metal oxides के साथ, जो non-metal होते हैं. For example, carbon,
नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, दीज आर ऑल नॉन मेटल्स। ठीक है, तो जो भी नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा वो नॉन मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। सो हियर द रिलेशन इज bases plus non-metal oxides give salt and water. Example is NaOH, which is a base, plus CO2, carbon dioxide, which is actually a non-metal oxide. क्योंकि कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, और इसका ऑक्साइड क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड. So when these two react together, they will form Na2CO3, which is known as sodium carbonate, which is a salt, plus H2O, which is water. All right. So these are the chemical properties of bases. I hope you have understood all the chemical properties of acids and bases. Please do learn by heart all these reactions. ठीक है, ज़रूरी नहीं है आपको यही reactions याद करनी है. आपको सबसे importantly क्या याद करना है कि जब कोई भी reactants react कर रहे हैं तो प्रोडक्ट्स क्या फॉर्म होगा, आपको रिलेशन याद रखना है. अगर आपको रिलेशन याद है तो आप प्रोडक्ट्स इजीली लिख सकते हैं. सपोज यू हैव बीन गिवन अ क्वेश्चन व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल, तो आपको मालूम है कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा और H2 गैस फॉर्म करेगा. ऑलराइट, सो यू हैव टू लर्न एंड अंडरस्टैंड ऑल दीज रिलेशन. अगर आपको रिलेशन याद है तो आप एग्जाम्पल आराम से लिख सकते हैं. ऑलराइट, okay, now let us review what we have just learned. Let us come to the summary. Now in this part I have written products. ठीक है, कुछ प्रोडक्ट्स लिखे हैं मैंने, और वो प्रोडक्ट कौन कौन से रिएक्टेंट्स देते हैं, दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड. ठीक है, ताकि आपको बहुत इजी हो जाएगा. अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो बहुत इजी होगा आपको आगे रिएक्शंस लिखना. ओके, सो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये प्रोडक्ट कौन कौन फॉर्म करता है, व्हेन एसिड और बेस रिएक्ट विद मेटल. ठीक है, ये हमने फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी दोनों की. ओके, नेक्स्ट इज प्रोडक्ट्स क्या है, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अब ये तीनों प्रोडक्ट्स किस केस में फॉर्म होंगे, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट. ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में प्रोडक्ट्स ये फॉर्म होंगे, व्हेन एसिड रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट के साथ और बाइकार्बोनेट के साथ. लास्ट इज सॉल्ट एंड वाटर. अब ये दो प्रोडक्ट्स कौन कौन फॉर्म करेगा, नंबर वन, जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे. ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सेकंड, एसिड और मेटल ऑक्साइड जब रिएक्ट करेंगे तब भी सॉल्ट वाटर फॉर्म होगा. थर्ड, बेस और एसिड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अगेन जब बेसिस और एसिड रिएक्ट करेंगे तब भी सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा. एंड फोर्थ, व्हेन बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड तो तब भी सॉल्ट एंड वाटर ही फॉर्म होगा. इज दैट क्लियर? ये मैंने समराइज करके आपको ये तीनों पॉइंट्स बताए हैं सो दैट यू कैन इजीली राइट रिएक्शंस ऑन योर ओन. ठीक है, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपको अगर ये रिलेशन याद है तो आप अपने आप भी रिएक्शंस लिख सकते हैं. सो टुडे वी हैव completed a very important topic. So please go through these chemical properties again and learn these real relations and reactions. All right? Okay, students, so this is all for today. All the best. Stay home and stay healthy, and thank you.